Assalamu alaikum. This is Iftkhar Zadi, and you're watching our YouTube channel, Project Human Resource Management. Today, our topic of presentation is an inside view of HRM and role of project manager. So, let's start with the table of contents that we are going to discuss in today's presentation. Firstly, we have what is HRM. Then we will go to evolution of HRM, nature of HRM, functions of HRM, HRM concepts, objectives of HRM, HRM cycle, project HRM, and role of project manager in HRM. So let's get into the details and start with what is HRM. Human resource management. Human resource management, in simpler words, is the management of people and their behaviors in the organization. It is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concerns. A management function that helps managers recruit, select, train, and develop members for an organization. HRM may be defined as a set of policies, practices, and programs designed to maximize both personal and organizational goals. Then we go to the evolution of HRM. HRM जो इस वक्त इस शक्ल में मौजूद है वो इस शक्ल में तक कैसे पहुंचा, वो उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो ये स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ये ज़रूरत महसूस की गई कि देर एक कोई सेटअप होना चाहिए जो ये जो लेबर है, जो वर्कफोर्स है, उसको मैनेज करने का, उनके उनकी वेलबींग को देखने का, उनकी सेहत को देखने का, उनके मामलात को समझने के लिए। तो दे हायर्ड अ वेलफेयर ऑफिसर जो ओवर द years इवॉल्व हुआ इनटू लेबर मैनेजर, और विद एडवांसमेंट it earned into personnel management in mid 20th century, which started procuring and developing teams. Then it turned into human resource management over the years with uh, development and technology. It started procuring, developing, and motivating the teams working in different industries and organizations. Then we go to the nature of human resource management. Firstly, nature of human resource management, the integral part of process of management. Integral part of process management means it is the variety of activities fall in human resource management. The main elements among them to determine uh, to determine the staffing required to some successful business, to run a successful business. The element which is essential is creating to job need or opportunity. Then we go to the comprehensive function. Comprehensive function is concerned with the managing people of work of all uh, types of people at all levels in the organization. It applies to the workers, supervisors, managers, officers, senior managers, and level at all level of at different tiers. Then we go to the pervasive function. Pervasive function is a function of HRM in which is performed by all the managers at all levels, at various levels in organization. It is not a responsibility that a manager can leave completely to someone else. He has to, or one has to fulfill his responsibilities at every cost. Everyone has to perform his job at all levels. This is what you call pervasive function. Then we go to people oriented. As uh, on the face of it, it says it people oriented. HRM should be people oriented. It should be फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, ताकि लोग अपना वो पोटेंशियल अचीव कर सकें, टीम बन सके, टीम एक जेल हो सके आपस में, और उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके। और बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस का भी तकरीबन वही मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात जो हैं आपकी टीम के मेंबर्स में हों, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें,
और कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग में, उसकी प्रोग्रेस में, उसकी गोल अचीविंग में. कंटिन्यूस प्रोसेस इज इट मीन्स कि HRM जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक that you do it once and then you don't need to do it again. रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन पॉलिसी है, ये जिस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं, रूटीन मैटर्स हैं, SOPs डेवलपमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये दीज आर ऑल कंटिन्यूस प्रोसेस और ये चलते रहते हैं. साइंस एज वेल एज आर्ट. साइंस एज वेल एज आर्ट, इट मीन्स कि इट मीन्स कि managing requires certain skills which are personal possession of managers. साइंस जो है वो प्रोवाइड करती है नॉलेज, एंड आर्ट जो है वो एप्लीकेशन से डील करता है. एप्लीकेशन है उसमें. अ मैनेजर टू बी सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन मस्ट एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ द अप्लाइंग इट. इट बेसिकली कि साइंस जो है वो एक स्किल है और आर्ट उसको इम्प्लीमेंटेशन. एक चीज़ आपने सीख ली, आपने उसको अप्लाई करना है. दिस इज़ व्हाट साइंस एज वेल एज आर्ट है. रिसेंट ओरिजिन एज वी डिस्कस इन एवोल्यूशन, जो इस प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट स्टेट में पाया जाता है. HRM जो करंट प्रैक्टिसेस जो इन प्रैक्टिस हैं, इंटरडिसिप्लिनरी. इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ये to the management of an organization's most valued assets, that is human resource. Human resource is considered as the most valued asset of the organization. That is people working there who individually and collectively contribute to the achievement of the objectives of the organization. Then we go to the basic to all functions. Basic to all function areas function include recruiting and staffing, benefits, compensation, training, design, organizational design, and all. Then we go to the functions of HRM. Firstly, there is policy. Basic function of HRM. Basic function of HRM is the policy making. SOPs के वो policy बनाए under the umbrella of strategic management. Then it's their job कि HRM में एक ख़ास हिस्सा है कि जॉब क्रिएट करे, जॉब क्रिएट करे, अट्रैक्ट करे लोगों को, प्लान जो डे टू डे मैटर्स हैं उनको प्लान करे, अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करे, मैनेजमेंट को, पूरा स्टाफ को ऑर्गेनाइज करे, उन्हें उन पे चेक एंड बैलेंस रखे, उन्हें कंट्रोल करे. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Recruitment and selection is a key feature of HRM. Job analysis and design. After recruiting the individual for a particular job, it's really important to design or develop the job description for that particular job. Then performance management system for particular job and appraisals accordingly. Compensation and benefits. Compensation not necessarily monetary. Compensation could be a leave package. Compensation could be a reward. Uh, Compensation could be a holiday package as well. Training and development. As you know, training is the responsibility of organization, and development is the responsibility of that individual to learn and develop um, his or her skills so that he could contribute to the success of organization and help achieving its goal. Employees welfare. Employees welfare is a very particular function of HRM, to take care of employees and their necessities. Industrial relation, to build healthier relation with other industry and other relevant industries. स्पेशली competitive advantage को रखते हुए अच्छे relations रखना. Labor relations, as you know, कि जो आपकी वर्क फोर्स है उनके दरमियान उनके साथ अच्छे रवाबित रखना. मेंटेनेंस में जो पर्टिकुलर चीज़ आती है वो
रिटेंशन पॉलिसी है और टर्नओवर पॉलिसी है, यानी कि जो आपने स्टाफ हायर कर लिया है, आपने उसको रख लिया है, आपने रिक्रूट कर लिया है, आप उसकी ट्रेनिंग करें, कैपेसिटी बिल्ड करें और उसको रिटेन करें, उसको मोटिवेट करके रखें और रिटेन करें और टर्नओवर को रिड्यूस करने की कोशिश करें। पर्सनल रिसर्च एंड रिकॉर्ड्स. Personal research and records is basically you have to uh, 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 go see in the organization के चेंज कहाँ पर लाया जा सकता है, पॉजिटिव चेंज कहाँ पर लाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, और उसके बाद रिकॉर्ड्स मतलब उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है. दिस इज़ द बाइफरकेशन ऑफ फंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. हम उसको दो उसमें डिवाइड किए कि मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं. मैनेजरियल फंक्शंस में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और ऑपरेटिंग फंक्शंस में जो मेन चीज़ आती है वो प्रोक्योरमेंट है, उसमें रिक्रूटमेंट उसमें आती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, सिलेक्शन आती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, प्लेसमेंट है, ओरिएंटेशन आफ्टर इंडक्शन जो है वो ज़रूर दी जाती है, और कॉम्पनसेशन है, इसमें जॉब इवैल्यूएशन है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट. और मेंटेनेंस में आप यू कैन कंसर्न विद प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज. देन वी गो टू द स्कोप ऑफ HRM. इंट्रोडक्शन टू HRM, जो हमने डिस्कस कर लिया कि HRM है क्या और इस व्हाट डज इट डू. प्रोस्पेक्ट्स ऑफ HRM, जो हमने नेचर ऑफ HRM डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन. एम्प्लॉय मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, very important as far as performance is concerned. Employee motivation is very important. As long as your employee is motivated, performance will come. Or it's the other way around as well. If your performance is coming, it means your employee is motivated. Employee remuneration है कि you are paying well to your employee. You have to make sure employee hiring है. Then we go to the HRM concepts. There are four basic concepts of HRM. As people management, as we have discussed earlier, people management um, policies and practice which govern how people are managed and developed in an organization. Then human resource management. Human is the management of people and their attitudes. It's the strategic, coherent approach to management. The most of organization most valued assets. People working there who individually and collectively contribute to the achievements of objectives. Personnel management है. Personnel management is concerned with obtaining, organizing, and motivating human resources required by enterprise. Then human capital management. Human capital management is same as interdisciplinary that we have discussed earlier. An approach for obtaining, analyzing, and reporting on data which informs the direction of value-adding people, management, strategic investment, and operational decisions in corporate level at the level of frontline management. Then we come to the objectives of HRM. There are four types of objectives of HRM: personal objectives, functional objectives, organizational objectives, and societal objectives. Let's discuss it one by one. Personal objectives. Personal objectives means the objectives of an individual who is working in an organization. Training and development. It's his or her appraisal, placement, compensation, assessment. Then functional objectives. Functional objectives have been discussed earlier. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में अप्रेजल है, प्लेसमेंट, असेसमेंट. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि उसने अपने स्टाफ को प्लान कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स की को किस तरह से लेकर चलना है, एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, दैट एम्प्लॉयज़ हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद ईच अदर. सिलेक्शन है, जिसे रिक्रूटमेंट भी कहते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, असेसमेंट है, अप्रेजल है, प्लेसमेंट है एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल. सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में लीगल कंप्लाइंसेस हैं. लीगल कंप्लाइंसेस आर दोज कंप्लाइंसेस विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू कंप्लाई. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है,
तो उसके लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसके अंदर रहकर उसको काम करना है। सो लीगल कंप्लाइंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस हैं, इंटर और इंट्रा दोनों साइड पे यूनियंस हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका उनके मामलात को विन विन सिचुएशन में रख के लेकर चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेनिफिट्स भी का मतलब यही है कि आपने अचीव करने हैं दोनों साइड पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और यूनियन के लिए भी। देन वी कम टू द HRM cycle. HRM cycle is basically uh, the it it describes the recruitment and then perform recruitment of an individual in an organization. You get selected, your performance get monitored, your performance get managed through training and development, you get rewarded, you show performance, and the cycle goes on. Project human resource management. Project human resource management includes the process that organize, manage, and lead the project team. It includes four steps: develop human resource plan, um, जिसका गोल होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान एक बन जाए। उसके बाद एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, जो उस प्रोजेक्ट के लिए आपको टीम चाहिए उसको एक्वायर करना, उसको रिक्रूट करना। देन डेवलप प्रोजेक्ट टीम, उसको टीम को असाइन करना काम, उसको उसको उसकी परफॉर्मेंस को जज करना। मैनेज प्रोजेक्ट टीम को, मैनेज प्रोजेक्ट टीम में उस टीम से काम असाइन करने के बाद उसको उस पर चेक रखना, उसको मॉनिटर करना, उससे अपडेट्स देते रहना। रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो HRM में रोल है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव द रोल इन HRM विद रिगार्ड टू फॉलोइंग प्रैक्टिस एरियाज। इन प्रैक्टिस एरियाज में HRM में बहुत अहम जो है वो रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। दैट इज़ फर्स्ट इज़ फ्लोज, जो एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट से लेके उसकी एग्जीक्यूशन है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है, उसमें फ्लोज है। फ्लोज में आता है परफॉर्मेंस, है उसकी टीम परफॉर्मेंस जो उसकी टीम काम कर रही है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन HRM एंड डेवलपमेंट। So let's discuss it one by one. Flows में participating in the recruitment and staffing of people to new projects। यानी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व को पार्टिसिपेट करता है जब उसकी टीम जो उस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो टीम उसका हायर हो रही है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। देन प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड, दैट इज दिस इज बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना अपनी टीम की, उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेना और उनकी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस पे अपडेट लेते रहना और उसको उसको बेहतर करते रहना। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद लाइन मैनेजर्स टू हैंडल शिफ्ट्स एंड चेंजेस। बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और IT सेक्टर में भी, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं जो कि मतलब दिन रात दिन पे काम चल रहा होता है, उस पर बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो आप का जो स्टाफ है उसको आपने शिफ्ट्स में डिवाइड किया हो ताकि उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइन मैनेजर्स के साथ जो है अच्छे रिलेशन हों, उनके साथ बैठकर एक स्केड्यूल बना लिया जाए टू मैनेज इट इजीली और स्ट्रीमलाइन की जाए चीज़ों को। Then performance, facilitating knowledge sharing within the project. A project manager has to share his experiences, his knowledge to his team members, so that maximum effort could be put by the project team, um, which ultimately will be helpful for the project. Detect and work to minimize problems in project work conditions. प्रोजेक्ट मैनेजर का ये रोल है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिमाइज करे प्रॉब्लम्स को, वो एक हेल्दी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट दे, एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट अपनी टीम को दे जिसमें वो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करें, प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करें, उसको रिजॉल्व करें और आगे मूव करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रिकग्निशन एंड फीडबैक टू इंडिविजुअल्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के जो इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं उनके अच्छे काम को भी रिकग्नाइज करे
we should pat their back if they do good, और उस उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक दे ताकि वो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करें और मज़ीद बेहतर रिजल्ट्स के साथ आगे आएँ। टेकिंग पार्ट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स विद लाइन मैनेजर्स, वंस टीम जब एक दफ़ा टीम परफॉर्म कर लेती है तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि उसको उस पूरे एक प्रोसेस को देख रहा होता है, उस पे लाजिम है कि वो अप्रेजल में लाइन मैनेजर के साथ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम के अप्रेज अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अप्रेज करें। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट इज़ बेसिकली इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजर इन द प्रोजेक्ट। उसमें ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्लैरिफाई करे असाइनमेंट्स, बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किसका क्या काम है, उसको कितना करना है, कैसे करना है, उसकी उसकी असाइनमेंट जो है वो उसको क्लियर हो। क्लैरिफाइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज जो भी एक इंडिविजुअल का रोल है, एक टेक्नीशियन है, एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रिशियन है, जो उसका प्रोजेक्ट में रोल है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको क्लियर कट उसको पता होनी चाहिए। इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट वर्कर्स अपॉर्चुनिटीज टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर वर्क परफॉर्मेंस एंड वर्क कंडीशंस, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे वर्कर्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में उनको काम करने का मौका मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे प्रोजेक्ट मैनेजर और उनको रिजॉल्व करे और उनको अच्छे मौके दे कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। क्लैरिफाइंग डिलीवरीज टू ट्रिगर मोटिवेशन, आउटकम जो है वो आउटपुट जो है वो उसकी क्वालिटी, उसका टाइम बड़ा क्लियर जो है अपनी टीम को कम्युनिकेट करे कि वो क्या चाहता है और कब चाहता है, ताकि एक मोटिवेशन हो, एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो विद इन टीम और अच्छे से अच्छा जो है वो काम करे टीम और मोटिवेट होकर काम करे। थैंक यू वेरी मच। और इसमें बहुत your comments will be welcome, your critique, your appreciation, whatever you like will be appreciated. Kindly comment uh, in the comment section and do subscribe our channel Project Human Resource Manager and hit the bell icon. Thank you very much.